all right, and welcome back. बल्कि आप सबको खुशामदीद जिन लोगों ने अभी हम लोगों को ज्वाइन किया है फेसबुक पे. वी आर लाइव राइट नाउ ओनली ऑन रेडियो दबंग फेसबुक. तो बिल्कुल हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, रेडियो दबंग 99.5 FM. एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी हु इज वाचिंग राइट नाउ. और साथ साथ हम बताते चलें कि हमारे स्टूडियो में दो हमारे गेस्ट मौजूद हैं. और आयशा, क्या इंट्रोडक्शन है हमारे जबरदस्त जो दो गेस्ट मौजूद हैं. पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. उनका तो इंट्रोडक्शन होता रहेगा. जो लोग समझ रहे थे ना कि मिस्ट्री आरजे कौन है, तो आज आप देख लें कि ये है आयशा जी. ये है और ये आपके साथ आज बैठी हुई हैं, फेसबुक लाइव कर रही हैं. और हम अपने दो प्रेस्टीजियस गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं आज. एक तो है हमारे नबील शाइक, राइट? और ये हमारे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट में, मुस्लिम साउथ एशियन मुस्लिम. That's true. It's very true. It's very prestigious. It's prestigious, very proud moment for every South Asian right now who's listening right now. American South Asian basically. Exactly. और कांस्टेबल है इनका पोस्ट. और हाउ डू यू लाइक टू बी एड्रेस्ड, एज कांस्टेबल शाइक और कांस्टेबल नबील? I go by Constable Shike. Constable Shike, that's what you prefer? Okay. So how do people usually refer to you in the regular outside? How do they usually refer to you when they're addressing you, when you go out and meet people? It depends. Okay. It depends. Depends on what? Everybody knows me as Nabil. Okay. So some people will call me Constable Saab, or Constable Saab. Nabil, or yeah. Sheikh Saab sometimes, right. Or just Constable Shike. Right, absolutely. And with us, we cannot forget, we have Captain Nasir Abbasi, जो हमारे हैरिस काउंटी के पहले मुस्लिम Fort Bend County नहीं, हैरिस के भी रह चुके हैं. अच्छा, सर्जेंट, wow, फर्स्ट awesome. मुस्लिम्स, हैरिस काउंटी की भी फर्स्ट मुस्लिम सर्जेंट, Yes. साउथ एशियन. और हैं पहले कैप्टन हमारे फोर्ट बेंड काउंटी के. तो ये कितने बड़े फख्र की बात है. दिस इज जस्ट अमेजिंग. आई नीड टू आस्क बोथ ऑफ यू, और मुझे बताएं आप, यू नो अ लॉट ऑफ साउथ एशियंस डोंट गो टुवर्ड्स दीज डिपार्टमेंट्स. आप लोगों ने कैसे सोचा इस तरफ आने का? You know, when I grew up, I didn't like police officers. Okay. And I had an encounter one day with a police officer, and he said, young man, be the change that you want to see. And you know, I decided I was working in the oil and gas, and decided to go to a police academy, and got hired on by former Constable Victor Trevino at Precinct 6 in Harris County, and then just fell in love with the profession and decided this is what I want to do. To me, it's the best job in the world besides being a father. Wow. You have two daughters, right? Two daughters. Am I correct? Mashallah. How old are they? Mashallah. A 7-year-old and a 4-year-old, and one more on the way. Okay, that's the fun time. Oh, Yeah. mashallah. There we go. Mashallah, Another one to the Shaikh family. That's really Yeah, nice. yeah. All right, Shaikh, what's your goals for your career right now? Like, do you decide something? What's your like final goals? You gonna be like a police officer till your life, or what you gonna do? Well, being the elected official, I can't make any promises for further office or anything like that. But right now, I am the constable for the next 4 years in Fort Bend County, and I want to make sure that I serve for the Fort Bend County Precinct 4 residents with honor and integrity, and be the best constable that they've ever seen. Wow, inshallah. Yeah. So we're prayer with you, and awesome, जबरदस्त. और हमारे साथ और कौन मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी गपशप करेंगे. साथ दोनों को बिल्कुल साथ लेके चलेंगे. हाँ जी, आपको कैसे महसूस हो रहा है कैप्टन नासिर अब्बासी? जी, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जब मैं दूसरों की नज़र में चमक देखता हूँ. हाँ. और वो ये कहते हैं कि यू आर आवर प्राइड. एब्सोल्युटली. तो उस वक्त जो फील होता है ना, उस जैसी एहसासात पहले कभी नहीं थे. और दैट इज़ रियली ए ग्रेट फीलिंग दैट एनीबॉडी कैन हैव. आप खुद सोचें कि एक आपके दूसरे बहन भाई दोस्त फ्रेंड्स ये कहें, यार यू आर माई प्राइड, आई सी यू इन यूनिफॉर्म, आई फील लाइक आई एम इन यूनिफॉर्म. राइट. तो बहुत अच्छा लगता है. आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र थोड़ा बाद में आपने ये सफ़र शुरू किया, ये पुलिस के हवाले से जो आपने सफ़र शुरू किया था. इट वाज आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स इन योर लाइफ. एज नहीं बताएंगे, वो नहीं करना हमने. बट हाउ डिड, हाँ जी, वो डेकेड्स ही काफ़ी है. आप इस तरफ आए कैसे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप ना पूछते तो मैं खुद इसमें अपना जवाब शामिल कर देता. मैंने हैरिस काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ज्वाइंड एट द एज ऑफ 44. और मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इस वक्त जुलाई में मैं 55 का हो जाऊँगा. एंड
I want to tell this because to all your audience, Yeah. कि अमेरिका में जो opportunities हैं, they are unlimited. Our system is very strong, fair. Sky is the limit when you're talking about opportunities. Yeah. So don't worry about in what age you are. Yeah. I promise कि कोई 55 भी आके मुझे मिलता है ना और कहता है यार मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है. I promise the system will allow him, give him all the opportunities to become a police officer. So you're saying in the US, age is really just a number. It's just a number. It's just a number. Yes. Like, I was thinking कि भाई आप 34 35 से ऊपर हो गए तो आप जा ही नहीं सकते पुलिस में. मैं तो नहीं वो वाला सिस्टम नहीं है ना जो बैक होम वाला सिस्टम है, वो वाला नहीं है कि बस इसी टाइम पे वो एग्जाम देने, अगर नहीं पास हुआ तो बस आप. That's very important. वाकई it's But really good. Yeah. certain agencies do have that. Here in the Houston metropolitan area, you don't really see a lot of that. And like Nasir Bhai said, we are truly the land of opportunity. Yeah. And, we like to give everybody a fair chance. Right. That's really good. और ये जो बैक होम वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको जैसे हम बैक होम को गुड बाय करके आ गए हैं ना, इसको भी गुड बाय कर दें. Cool. प्लीज जैसा देश वैसा Vesa भेज. base. Vesa base, that's Absolutely. very Do true. in Rome as the Romans do. All right. We're all about I have a that. question for Nabil. Nabil, like Desis now come to you. Hey, Nabil, मेरा काम फंसा हुआ है यार. वो यार बंदा जेल में चला गया, उसको बचाना है. Something like that. They come to you for like such things, for privilege. टिकट साफ करा दे. यार टिकट मुझे आ गया, फाइन हो गया यार, $100 कम करवा दो, something like that. So It's typical Desi thing, you know that, right? Like Yeah, I if know. you're Desi, you have that feeling, oh, मेरा भाई पुलिस में है, मुझे हाँ. कोई कुछ नहीं कह सकता. हाँ, और Something क्या like that. जानते हैं हम लोग. Yeah. बड़े ताल्लुकात हैं हमारे Yeah, पुलिस वालों के साथ. Nabil is my हाँ. cousin. Nabil is my cousin. Don't mess with me. It It's happens. actually happened, but what I can tell you as police officers, we are the enforcers of the law. Right. We don't write the law, we enforce them. And we're not the judge nor the jury. So if you get a ticket or, are arrested of a crime, you got to allow the justice system to do its part. Right. So सुन लो भाई सारे के सारे ये कहेंगे भाई नबील मेरा कजन है, तुम्हें टिकट मुझे मिला है, जो ड्राइविंग का फाइन हुआ है, मैं नबील के पास जा रहा हूँ, कम करवा देगा, कोई सीन नहीं है. It's America, so we have to follow a certain system that we are doing here, or I think this is the best part. बल्कि आई विल एक्चुअली रिक्वेस्ट, देखें जैसे मैंने कहा ना पीछे वाली चीज़ें, अगर हम उन चीज़ों को गुड बाय नहीं करते, हाँ हम अपने साथ जो अच्छी चीज़ें लेके आए, फैमिली सिस्टम, बाय ऑल मीन्स प्लीज़ उसको एडवोकेट करें, यहाँ पे उसको फैलाएं, स्प्रेड करें, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं उनको छोड़ दें. देखें इस वक्त अमेरिका का सबसे हाईएस्ट लेवल पुलिस रैंक मुसलमान बैठा हुआ है, ठीक. मैं शेरिफ्स ऑफिस में आपको जैसे बताया कि द फर्स्ट वन एज ए कैप्टन. अब कोई दोस्त कर देते हैं यार टिकट्स के लिए फ़ोन. आप खुद सोचें कि हमने यहाँ पे बहुत सारे इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग ऑल साउथ एशियन कम्युनिटीज़, ऑल मिनॉरिटीज़, हमने उनको लीड करना है, उनके बच्चों को हमने उनको लॉ इन्फोर्समेंट में लेके आना है, सरकारी जॉबों में लेके आना है. किस तरह लेके आना है, उनको मिसाल बन के हमने दिखाना है. तो आप एक छोटी छोटी टिकटों पे हमें ना चैलेंज करें प्लीज़. It's a message. It's a message for everyone. Clear message. And not just that, I represent about 250,000 residents in the Fort Bend County Precinct 4 area, about a 225 square mile area. But I just don't see it as that. As a Muslim, I represent the 1.7 billion Muslims around the world. That's right. And I'm held at a higher standard than somebody who may be a different religion or a different race than I am. Right. Yeah. That's very true. And that's really good. So, bilkul. And the only reason we want to diversify our public service departments, the reason is so we can represent all minorities, not just when we get on a certain rank, we're only going to help our own people. Yes, that's okay to have that little, you want to help your own community in ways that is on your side time. But I think really you're representing the diverse population of the city and the precinct that you live in. So you have to represent all of them and just treat them equally and take them along with you. Exactly. And Precinct 4 is the most diverse precinct in Fort Bend. Yeah. And Fort Bend County is the second most diverse county in the nation. Yeah. And, a lot of people want to talk about diversity, but diversity means nothing without inclusion. And that's what this past election has brought forth. We've elected a Muslim, a South Asian constable. And by helping elect a Muslim South Asian constable, just look
what the sheriff's office has begun. They started diversifying their command staff, and today we have Captain Nasir Abbasi as part of that command staff. Absolutely. So I have a question, Nabil. Like, what's your hobbies, man? What you do? Like, we normally see the cops; they're like very strict and very like firm kind of person. But they still have like some kind of soft heart inside and something like that, right? So, what's your hobbies, man? Just leave the police department for a side. Just let's see what basically Nabil is. Oh, all cops, man. Our hobbies are donuts and coffee. That's it. No, Well, but like because we're Desi, it's more like chai and samosa. Chai samosa straight out the door, right? There you go. But No, when I see your physique, mashallah, you're doing like very good. So I don't think so. You are like a kind of samosa person. You look like a more sporty. Give me samosas. Okay, there you go. No, but I love playing basketball. Mm-hmm. Won the Houston Rockets Blacktop Battle. Wow. Which is a competition, a 3-on-3 competition Mm-hmm. with all the basketball players from the city of Houston. Wow. And alhamdulillah, I've won that 2 times. Mm-hmm. I do Brazilian Jiu-Jitsu. Right. So I like to compete, and it's a good way, especially being in the profession that we're in, to defend yourself and Right. not having to always resort to a level of intermediate or deadly force. Mm-hmm. So I use a lot of that stuff, to prepare me and to train me on the law enforcement side. Right. I'm a very big family man, so I love spending time with my wife and my kids, Right. and taking them out to the movies, and everything you have in this world is your family. You have your God, then your family, then it's service to others. That's right. That's very Absolutely. right. Yeah. Captain Saab, how is your life other than when you're not working, when you're not serving the community? What do you do? Well, या मैं घर में होता हूँ अच्छा या मैं कम्युनिटी सर्विस ही कर रहा होता हूँ. अच्छा. कल बल्कि उस दिन एक इवेंट था जो यहाँ पे सईद शेख साहब और एमजे खान हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग दोस्तों में से हैं जी. तो उन्होंने एक इवेंट किया इसी के लिए. तो वहाँ पे एक अच्छी बात निकल गई. मैंने कहा यार मैंने आज तक एक पाई नहीं बनाया वेदर आई वाज इन यूनिफॉर्म और नॉट इन यूनिफॉर्म. व्हेनेवर आई सॉ यू, व्हेनेवर आई मेट यू, व्हेनेवर यू फाउंड मी इन योर गैदरिंग्स, I was there on my own time. Right. I never earned a penny as being a community outreach cop. Right. You were not paid for your speech I was or not talk paid over for. there. So Okay. basically, या मैं घर में होता हूँ या मैं community outreach में personal level पे होता हूँ with the permission of my department. How do you think your career, because I think everybody has a certain struggle with every career, whether it be a physician, whether it be IT consultants, whether it be businessmen. It's hard to balance, especially in your profession, a family life, and the dangers that you face outside. Obviously, on a daily basis, you never know what's coming your way. That's right. How do you handle that mentally? देखिए बाय नेचर अगर कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचता ही नहीं. शायद हमारे जहन में वो चीज़ आती नहीं है. डर, फियर, ये चीज़ें हम में नहीं आती ऑनेस्टली. इसी तरह हमारे दोस्तों में भी वी इवन डोंट इवन टॉक अबाउट. हम तो बल्कि तैयार ही रहते हैं कि यार अगर कुछ हो गया तो हो गया. अच्छा. सो व्हाट. हाँ. हम इस काम के लिए सर पे कफन बांध के निकले. लोग जब पेन कापी ये वो सुबह लेके तैयार हो रहे होते हैं, टाई वाई लगा रहे होते हैं, हम उसमें मैगजीन में बुलेट्स डाल रहे होते हैं. इट्स नॉर्मल. नाश्ते की टेबल पे बस मैगजीन लगी हुई है. गोलियां हो गया. So this is quite common. It's not a big deal. हमें हमारी फैमिलीज भी मेरी वाइफ की फैमिली में भी पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैं. तो even some of them still have bullets in their bodies in Pakistan. Wow. तो it's common for us. ये खून में है फिर तो. हाँ, ये you तो can खून say में है. that. So your wife is obviously very supportive and understanding in Yes. that way because she's seen that all her life. Yes, she Oh, has. that's wonderful. Yes. So Nabil, you are on Radio The Bung right now. So we are the music radio station, right? So we play like every kind of music, Southeast Asian, any kind, like Punjabi. What's your favorite? I know you born and raised here, but like you still have like a little desi inside you, right? Oh, I have a lot of this. पर कूट के भरा हुआ है. So what kind of music you like? So I listen to a lot of Punjabi. I think growing up, you have kids now have a sense of identity problems, and so growing up, you want to blend in so much with society, Right. and you forget about your culture and who you are. And it wasn't until I was about 21, 22 years old until I
fell in love with the culture itself, Right. and started listening more and more to Punjabi and Urdu and Hindi music. Right. But being from Houston, I love hip hop and rap. Right. But I'll listen to anything that has some good lyrics or some good beats to it, or something that is meaningful. But I mean, So, particular song or right. No, I'm just asking like what kind of is, so that's what you cleared already, like you like Punjabi music. Yeah. So अब हमारे पास ये चांस है कि हमें एक कॉप कार मिलेगी जिसमें से भंगड़े की आवाज आई होगी टप 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 जहाँ वैसे कितना मजा आया उसके चेरी ऑन हो और जो है ना And the उसकी जो bhangra is going ठंगा and actually on my way here, I was listening to some stuff. I have a playlist Right. that I मेरे actually दिमाग में listen बड़ी to. अजीब अजीब किस्म की ख्वाहिशात अब आ गई हैं मैंने गाड़ी में बैठ के मैंने अपने Ray-Bans लगा के Right. No, it's gonna be like fun thing like कॉप कार है वो रुकती है वो आपको टिकट देने के लिए आई है but soon he just pull down the पीछे window ढोल बज रहा है। नीचे भंगड़ा चल रहा है पूरे बारात के साथ आए हैं सही नहीं अगर हमने नबील से म्यूजिक का पूछे तो बिल्कुल हम नासिर भाई से नासिर साहब आप बताइए आप किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं यार आपको पता है कि मेरी उम्र के हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि उम्र के तो हम उम्र किशोर तो कुमार there's और no age. मोहम्मद You रफ़ी said वगैरह age को is- सुनते आ age is रहे just a हैं। number. आप बताएं हाँ, असल में हुआ ये कि साथ साथ में कल्चर भी बदला, मुल्क भी बदला, अंग्रेज़ी को टूल समझ के सीखना पड़ा। पाकिस्तान में टिपिकल पंजाबी मीडियम स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो अंग्रेज़ी तो बहुत दूर की बात थी। तो बहरहाल ये है कि म्यूज़िक व्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक रहा और अब भी जवानों से ज़्यादा भंगड़ा कर लेता हूँ। मैंने वीडियो देखी था। I just saw the video yesterday on Facebook. I just remembered. I saw the video and you are the one who danced. I am the right? one. बिल्कुल मैंने I am that culprit. I saw that video yesterday. It was on my Facebook. And then he'll grab me and say, Yeah. "Bill, you Like- come and dance with me too. I can't dance by Aja. myself." आप आ जाएं। और बंदे ढोल वाला बुलाना चाहिए था यहीं पे शुरू हो जाते तो हम भी साथ ही शुरू हो जाते हैं। हमें तो मौका चाहिए। तो और क्या, हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारो, बिल्कुल सही बात। एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो। अगर कोई बुरा भी करता है उसका सोचो ही नहीं, हाँ अपनी इस दुनिया में मगन Shut रहो, up that एंजॉय voice. करो लाइफ। हाँ, बिल्कुल और चलें ये तो थोड़ा फन वाली साइड होगी। वैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द crime situation nowadays in Houston area or somewhere the surroundings? Is it like getting better or after the elections? So crime is, no community is immune to crime. So crime can occur in any community. Doesn't matter if you're living in, the Sweetwater side of Sugarland, or, you're living in a more economically challenged or socioeconomically deprived community. Right. And so crime doesn't discriminate. But one of the crimes that we are seeing a rise of, I know within our own department in the Fort Bend County Sheriff's Office, is burglary of motor vehicles. A lot of people are either leaving their doors unlocked, Right. or you have what's known as smash and grabs, where they'll come in and break a window and then grab like a purse or some valuable thing out of your car. Right. So we have seen a rise in that. You've also seen a rise in domestic violence. That's We're going through COVID, and typically you'll see that rise during times where families are together. they're quarantined and During the holidays, yes. it happens a lot. And now that, you have financial hardships and, the hardship of COVID, you're starting to see a rise in domestic violence. And in fact, we've already responded to cases where, people have been shot and killed due to domestic violence situations. And it should never lead to that. I mean, we have a lot of programs between, especially with the Fort Bend County Sheriff's Office and the District Attorney's Office, to try to help, victims and then help families in general. वैसे इस पे थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं जो कैप्टन हूँ वो शेरिफ एरिक फेगन की वजह से हूँ। ही इज़ द वन हु एक्चुअली अपॉइंटेड मी एंड ही वांट टू diversify his command staff. So both thumbs to him, first of all. Absolutely, as the first African American as well Yes. in Yes. Fort Bend Yes. County. Wow. So Since yeah, Reconstruction. since Yes. Reconstruction, yes, Wow. absolutely. तो मैं इंशाल्लाह हम लोग इस मामले में सीरियस हैं, और चूँकि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के जो घरों के प्रॉब्लम है ना, ये लोग नहीं समझते, ना ही अंग्रेज़ों और यहाँ के लोगों को नहीं पता कि हमारे अंदर के जो मसले हैं और बहुत ज़्यादा हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी बहन भाइयों से
कि यार अगर आप इस तरह के मसलों में हो, घर देखें हर एक के घर में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल इट इज़ पार्ट ऑफ नेचर ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। तो अगर मसले मसाइल हो जाएं अपनी स्पाउस के साथ तो प्लीज़ तरीके से हैंडल करें, मार कुटाई या वो जो पुराना देसी स्टाइल था वहाँ पे पाकिस्तान वाला, उस पे नहीं आए, आपके फ्यूचर ख़राब हो सकते हैं, आपकी बड़े, और गुनाह तो है ही अपनी जगह पे। मैं इसलिए हमेशा एक काम करता हूँ, मैं तो भाई अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ कि मुझे कॉल करो, मैं आपको बताऊंगा किस तरह इससे निकलना है आराम से। और इसलिए मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉल करें, इसीलिए हम लोग बने इसलिए हैं कि आप लोगों से अटैच होने के लिए। तो मेरा नंबर लिख लें आप, 832-232-1934, ये मेरा पर्सनल सेलफोन नंबर है, 832-232-1934। कोई मसले मसाइल हो रहे हों घर में, मुझे पूछें कि किस तरह इनको हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी कॉल करते हैं और सारी प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। यानी एक आदमी वहाँ से ले आया अपनी स्पाउस को, वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने भी बेचारे ने यहाँ पे लोकल बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों को शादी नहीं की, वो पाकिस्तान गया, वहाँ से लेके आया, क्योंकि उसके जहन में कुछ और जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, उसको आए हुए काफ़ी देर हो गई है, वो उम्र में भी थोड़ा बड़ा है, अपनी उम्र से ज़रा थोड़ी छोटी लेके आते हैं क्योंकि बच्चे भी पैदा करने हैं, तो वो बड़ा गैप जो है पैदा हुआ है ना, ठीक है ना। This is like really my kind of scope. और वैसे भी वो चूंकि थोड़ा तरक्की कर चुके होते हैं अमेरिका के लिए, वो अपनी फिर उस चीज़ को यूज़ करते हुए ज़रा बड़ी वहाँ की टॉप की खूबसूरत चीज़ को ले आएंगे। अरे भाई ज़रा हक़ाइक़ को जानो, फिर कुछ अपने आप को भी थोड़ा सा मोल्ड करो, कुछ उसको समझो, फिर जाके शादी चलेगी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मार कुटाई पे आ जाते हैं काम। वो आते ही बेचारी वो वहाँ पे महल देख के आ रही होती हैं, सपने उसके देख के आ रही होती हैं, यहाँ पे आके देखती हैं कि हस्बैंड साहब तो जनाब सारा दिन गैस स्टेशन से नहीं फारिग होते। तो वो बड़े मसले मसाइल हैं, तो बहुत इनको हैंडल करना हम इसकी बल्कि कांस्टेबल नबील शाइक से और शेरिफ एरिक फेगन से और हमारे दूसरे जो दोस्त हैं काउंटी में, हम इनसे मिलके कुछ इस तरह की कुछ ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे, जो हमारे पढ़े लिखे हजरात हैं, PhDs जो काउंसलिंग, कि हम इस मसले को किस तरह से सही तरह से हैंडल करें ताकि लोगों के फ्यूचर सेफ रहें, लोगों के फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं इस तरह। वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और मतलब ये बात ऐसी है कि मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। मसला ये है कि जब आप किसी चीज़ को एक आइटम की तरह समझते हैं या उसको एक ट्रॉफी की तरह तसव्वुर करते हैं, तो आप उसको इंसानियत के दायरे से निकाल देते हैं, आप उसको ह्यूमन बीइंग नहीं समझते, देन दे डोंट हैव एनी राइट्स एंड दे डोंट हैव एनी इमोशंस एंड दे डोंट फील पेन। इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट दैट्स देयर टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, यू नो, प्रोवाइड यू विद चिल्ड्रन and kind of be the responsibilities that a wife should have. तो उसमें फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। And just to touch a little bit on Captain Abbasi, so what we're doing now in Fort Bend County is trying to hire more Desis. I hired the first Pakistani deputy in Precinct 4's history, and we have 2 more that are coming on board. And one of the things that I spoke to Sheriff Fagan about was having a culture diversity program. Now, all police officers have to go through an 8-hour culture diversity training in order to gain, you know, certificates. Well, when I spoke to Sheriff Fagan about it, basically what we're going to do is have members from, you know, the Muslim community, and not just, you know, we have several different sects of Muslims. You know, you have your Shia, Aga Khani, your Sunni, and so on. And we have them actually come in and teach, you know, 30-minute to hour blocks about the culture and the religious side of it. And then we also have the Sikh community come in, and then the Hindu community come in. And, you know, the Jewish community, and everybody, they're all community members that are coming in and actually teaching not only our police officers, but our staff, our telecommunication officers that are responsible for when you call 911, and they're the ones that are sending us out or our deputies out to calls. And then that way we have a better understanding of culture in general, because we live in America and in Texas and in Fort Bend County, we're a huge melting pot. And I thought of the program, and it's something that we're looking to implement. We're going to try it out, and hopefully it's, inshallah, it goes very good. Inshallah. And then it can be something that we adapt not only in Fort Bend County, but around the state and hopefully around the country. Wonderful. So, Nabil, as you told us about the burglary things nowadays, so आप कोई suggestion दोगे हमारे जो listeners हैं उनको कि what should we do, like
You have to keep our car logged and everything all the time, something like that. So what suggestion are you going to give to our audience? So one of the things I would always suggest, we call it the 9 p.m. routine. Every day at 9 p.m., you check your car doors, make sure your windows are closed, your doors are locked. And if you have anything of value, you know, a long time ago, I used to keep a gun in my car. Right. And had to learn to take my gun out of the car. And that's what, you know, bad actors, you know, those that want to appropriate your crime and cause damage, appropriate your property and cause damage, you know, to your personal belongings, like breaking into your vehicle. Right. That's what they're looking for. They're looking for easy opportunity. And so if they see a purse or they see, you know, I know I go to the gym, so I have like Beats headphones. Just hide everything. And as they walk up, you know, they may start trying to check your doors. If they're locked, they move on to the next one and on to the next one. And our South Asian community, that it affects us a lot. So that's one way what we can do. If you haven't installed, you know, cameras on your home, they may not affect you, but they may affect your neighbor. Right. So, you know, those cameras are great investigative tools for the responding deputies or officers that are coming out there. Right. Where we can, you know, view them and maybe get pictures of people. Right. Or license plates on vehicles. And try to, you know, find them, apprehend them, and, you know, put them in jail and try to get, you know, maybe some of your property back. Right. और इसके अलावा चूँकि when I was in Harris County, I'm certified crime prevention specialist. तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे इंशाल्लाह within few weeks और months अभी. तो हम एक टीम तैयार करेंगे या एक्सपर्टीज डेप्यूटीज़ की. ठीक है ना. आप हमें बुलाएंगे छोटी गैदरिंग में, whatever the allowable numbers of gatherings. They will go there and teach people how to prevent a crime. They are certified, they are licensed. तो वो इवन आपको वो भी बताएंगे कि दरवाजे में, डोर में लॉक कैसे लगाना है, शीशे को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, विंडोज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है. These all type of things. They will even show you the videos and technical things, all those things. Right. I just want all your audience to be ready. Now we are here. Right. And inshallah ta'ala, I want इनवाइट करें हमें. नंबर तो मैं दे चुका हूँ. आई एम फ्रॉम फोर्ट बेंड काउंटी शेरिफ्स ऑफिस. कांस्टेबल नबील शाइक इज फोर्ट बेंड काउंटी प्रीसिंक्ट 4 कांस्टेबल. सो प्लीज़ गिव अस ए कॉल, स्टे इन टच. हम भागने वाले या वो नहीं कि हम जीत गए या जॉबें ले ली या हम दूर हो गए ना. हमें तो भाई भुलाओ. अभी तक जब से मैं कैप्टन बना हूँ ना, I have not taken off yet. जी नहीं, बहुत अच्छी बात है. और आपने सर्टिफिकेशन की जो बात की है उसके बारे में मैं थोड़ी सी और बात करना चाहती हूँ. इंसान तो सारी उम्र सीखता रहता है. आप मैं देख रही हूँ आपके रेज्यूमेज में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन स्कीम है, चाहे वो पीस में हो, चाहे वो इंटरोगेशन की हो, आपस में रिकन्सिलिएशन की हो, क्राइम सीन को किस तरह मैनेज करना है, ये सारी आपकी सर्टिफिकेशंस में हैं. How does it help you and has it helped you grow in your rank, in your job? Oh, definitely. You know, first thing I had to do was go and obtain a degree. Your bachelor's degree. So I obtained my bachelor's degree and at Lamar University in criminal justice. Yeah. And then I said, hey, why stop just there? Yeah. Went and took my LSAT and alhamdulillah was just selected to go to law school at Really? South Congratulations. Texas, awesome. Thurgood Marshall. Okay. That is amazing. Yeah, so I started in the fall, and I'm always looking to build myself and to learn something. Right. And, you know, you talked about certificates. You know, currently I have an advanced police officer certification. And, you know, the highest level that you can get in law enforcement, according to TCO, is a master's. Right. And typically you reach that master's once you have taken a series of classes. And you have to get your basic, your intermediate, then your advanced, and then your master peace officer. Right. And then after you obtain your master peace officer, that's the highest level that you can get. Right. But you can obtain that quicker than just years of service by getting an education. So as you get a bachelor's degree, instead of having to do, let's say, 10 years or 12 years, you're having to do it in a couple of years less. Right. You get your master's degree, and then it drops down even more. Right. So you can have
a 6-year, 7-year police officer with a master peace officer certification from Texas. Now, a lot of people talk about your certification, but that's not entirely everything that you need. Right. So the education side of it is even more just as important. So currently in Fort Bend County, you don't get paid for having a degree. But, let's talk about a degree. Some people say a degree is just a piece of paper, and it could be. It's way more than that. A lot goes into it. And for police officers, I think it's very critical and crucial. And there's been some studies that have shown that, those officers or deputies that have a degree tend to be better critical thinkers. And so wouldn't you want somebody that is a really good critical thinker when it comes time to, let's say, police officers sometimes have a split second to make a decision. And, being able to critically think can help prevent a loss of life. Yes. So, I have a lot of training. 5,400 hours of training, educational training, and counting. Yes. And counting. That's amazing. You do wear a lot of hats. I was reading about it. I was like, I don't even know how to keep all of that in my head. But, you're a father, you're a husband. You are in a profession in which your life is kind of, always in some kind of risk. Significant risk, right? And on top of that, you're also pursuing and grooming yourself and educating yourself. And I really want you to talk a little bit about the much deserved award that you got from FBI, the Trilogy Award. How did you come about that? How did that happen? So I've gotten 2 very prestigious awards, but we'll talk about the FBI LEDA first. That's the Law Enforcement Executive Development Association Trilogy Award. So that's basically a 3-week series. You have to go through the supervisory, then the command, then the executive. And once you complete all 3 of them, then you obtain the Trilogy Award. It's about the 3rd highest leadership training that you can take, recognized here in Texas. You have, the FBI National Academy, which is a very, very difficult program to get into. You have to be a lieutenant or higher, and you have to be sponsored in order to be able to attend that. Then you have the Bill Blackwood Law Enforcement Management Institute of Texas, and then you have FBI LEDA. So I've already, this past week, have completed some leadership with Limit, which is, the Bill Blackwood Limit. Yeah. I already have LEDA, and now I'm aiming to go to the FBI National Academy. Does your day have 48 hours in it? Because my day has 24 hours in it. How are you doing all of these things? I'm like, you're doing this, and you're also going into law school, and you're also doing these courses, and you're also doing certifications, and you're doing your full-time job. Yeah, because mine have only 12 hours. Yeah, well, we all get the same amount of time in a day, and it's, what I've done was create short-term and long-term goals, and I put it on my wall, and, knowing that, you never want to miss your short-term goals. If you always aim for your long-term goals, you'll miss a lot of things that you could have accomplished in between trying to reach those long-term goals. So that was one of the things that I've done. And then my second award, which I think is even higher than the FBI Trilogy LEDA Trilogy Award, is the Community Service of the Year Award that I received. Yes. And that one was really touching to me, and it actually made me appreciate it more. And just a little backstory on that one. We did, when I worked in Harris County, we did a lot of things with the community. And in fact, my boss would call us and say, "Hey, man, y'all are doing too much in the community." And, I ended up buying a basketball goal. There was a child, a young teenager I used to play basketball with, and stopped by and play basketball with them, and noticed that he wasn't outside, and was responding to an unrelated call next door to him, and talked to his mom, and I said, "Hey, I haven't seen Aubrey in a long time. Where is he?" And she's like, "Oh, he's inside the house." And I said, "Oh, can you get him? I haven't talked to him in a while." So we started talking, and I asked him how he was doing in school, and he said he wasn't doing too good. And I said, "Okay, let's make a deal. If you get your grades up, I'll buy you a basketball goal." Wow. And sure enough, it was around Thanksgiving. And he got his grades up, called me and said, "Hey, I got my grade, got them up." And I said, "Man, let me talk to your mom." And she's like, "Yeah, he did." And they sent me a copy of his report card. Wow.
And now I said, okay, I got to be true to my word, and I But went. for a and, little kid, a police know, officer but- in uniform, that's just like the whole thing. Idea is just so magical for when you look Yeah. at it from a kid's point of view. You yeah, know. and I would, make an effort, help them put the basketball goal together, and would make an effort when we weren't busy to go, and I would wake them up in the morning sometimes during the summer, and have them come outside, and we Right. would play basketball together, and I would kind of coach them, and have a couple of videos that had went viral with us. And That's it, great. it made me appreciate that that's award. really integrating the community. Yeah, and it with your made me department, yeah. appreciate the award a whole lot more with the passing of Nasir Bhai and Mai's brothers, Deputy Sandeep Singh Dhaliwal, Yep. because he was such a trailblazer and did so much when it came to community policing and helping not only his own community but the community as a whole. And one of the things that we are going to do, because I was also a recipient of that award, is in December we're going to have a yearly award banquet, and our Community Service of the Year award will be named after Deputy Sandeep Dhaliwal. Inshallah. इंशाल्लाह. Very nice, very nice. कैप्टन नासिर, एक सवाल है आपसे. आपके बारे में ये कहा गया है कि the reason Sheriff Fagan chose you was because he thought that you mirrored Sandeep Dhaliwal. Oh, wow, that is Yeah. a big honor for me. Because he was also the kind of person that stuck to his roots, but at the same time was representing the diversity of Houston, the way he integrated with the community, the way everybody loved him. And then when it was a sad day for everyone, no big matter loss, it was a big loss. big huge loss. Yep. And I think it was said that he saw kind of that image in you, and that's why he chose you. Oh, that is a big honor. Those are great words. And especially Sandeep's dad himself said that. Wow. उन्होंने कहा मेरी सेरेमनी पे भी आए थे, जी. तो वो कहते थे कि आई सी संदीप इन यू. तो मुझे अपने घर बुलाते हैं, उनकी बहनें मुझे वड्डे पाजी कहती हैं, क्योंकि संदीप भी मुझे वड्डे पाजी कहता था. जी. लाइक नबील टुडे, जी. इट वाज संदीप वंस, क्योंकि नबील अभी छोटे थे. जी जी जी. तो संदीप भी बहुत ही हमारा इकट्ठा ही होता था काम. तो शुक्र है कि नेचुरली हम एक जैसे ही थे, लेकिन उनको फिर टर्बन ने जो उनको ब्लेस किया सोसाइटी में, दैट वाज ए ग्रेट ऑनर फॉर हिम. दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी अगर आप लोग मुझे इस तरह देखते हो. एंड आई प्रॉमिस, ये देखें, ये मेरे फ़ोन पे अभी भी सिख कम्युनिटी की ही मैसेजेस आ रहे हैं और कॉलें आ रही हैं. कि वो सुन रहे हैं आपको? नहीं, उससे पहले ही कि उनको पर्सनल लेवल पे काम होते हैं. wonderful, जो भी होता है वो संदीप की जगह पे मुझे ही करते हैं कॉल. एंड दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी. You're keeping his legacy alive. Yes, and I want, if your listeners are from Hindu community, South Asian communities, please call me. Call us, Nabil, Shike. Call me. We are here for you. We want to take all the communities, especially the minorities, because they have wrong perception about law enforcement. बिल्कुल. आइए सब मिल के अपनी सारी इन कम्युनिटीज़ को ज़्यादा अवेयर करें, इनको नॉलेज दें और उनको एक स्टेप आगे ले जाएं, प्लीज़. हम भी आपको इसीलिए लेके आए यहाँ पे, ताकि वो ट्रस्ट को हम बढ़ा सकें शुक्रिया. अपनी कम्युनिटी के And साथ. the beauty of Houston के Absolutely. इतनी डाइवर्सिटी है जी. कि माशाल्लाह, और सब मिलके रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से. और स्पेशली और अब हमारे दो साउथ ईस्ट एशियन जो कॉप्स हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो दिस इज अ बिग ऑनर. Yeah. और you guys are making us proud basically. Yeah. Well, All alhamdulillah, the we have a seat at the Southeast table Asians. now. Yeah. You have a seat at the table, That's true. absolutely. You have a True. voice that's heard, you have a seat at the table, and you have a huge responsibility, because when somebody talks about you, it's not going to be, they're going to be not talking about, oh, this is, a Constable Shike, or this is Captain Abbasi. They're going to be like, oh, this is the Muslim dude, or this is the South Asian dude. Yeah. And, how are they different than the previously elected officials? What work are they doing, and how did they bring everybody together? Wow. That's a huge responsibility. That's great. That's great. So I think we need some messages from both of you. हमारी जो youth है, any message for the youth who want to be a cop, or how we prevent the crime actually. So ये इसके लिए कोई message अच्छा सा अगर आप देना चाहो तो mic is all yours. Just a Sure, message for so- the youth basically, because you're a young guy, so I think it's better to address with the youth who want to be a cops. Yeah, so one of the things that we did incorporate on day one, I said that, Mariam Islamic Center
was paying over $60,000 a year for police officers during Jummah Namaz and Ramadan. It was close to about $70,000. Wow. And one of my promises were to get rid of religious establishments having to pay for security. Right. Maryam Masjid was the first to sign up for it. Alhamdulillah, we were able to now save them over $60,000 a year by providing them free police officers during Jummah. Currently, right now, we're working on the Ramadan side of it. That's approaching us really quick. We just need to make sure that we have the staff available to be able to handle that. Right. And, you know, my big thing with the Maryam Islamic Center's leadership was, hey, y'all take that money and invest it into our youth. Right. I see a lot of our younger brothers and sisters that start getting involved into drugs. They're starting to, you know, disobey their parents. And, you know, one message that I have for them, you only have one mother and you only have one father. Sure. You can't ever replace them, you know, so you need to learn to respect them. They want the best interest for you. And if you're looking to want to get into our profession, Nasir bhai gave his cell phone number, and I'm going to give you guys my cell phone number. Oh. And that's 832-755-0922. And that's my personal direct cell phone number. I get a lot of, you know, phone calls. We're here to help. We're here to guide you, to mentor you. My chief deputy was one of the first Bigs in Blue, is what they call them, in the city of Houston. And that's what he did. He mentored, you know, mainly young troubled minority kids, and would go out and have, let's say, lunch with them. And that's all they did, would just sit down and have lunch together and talk. So it is a program that we're hoping to bring into Fort Bend County. I know our district attorney, our great district attorney, Brian Middleton in Fort Bend, also, has launched a youth program as well. Right. So we're always looking to help build our youth. And if you're wanting to get in law enforcement and you're at the age of about 20 and a half years old, reach out to us and we'll help you get into a police academy and we'll help you find a job, whether it's in Fort Bend County or in any other police agency. We have a lot of friends all around the Houston metropolitan area. Awesome. And can help and guide you. And मैं भी ऐड कर दूंगा क्योंकि हमारे देसी अपने बच्चों को उधर भेजना चाहते हैं where the money is. Yes. So जी. let me just tell you, law enforcement is not that bad at all. It's very lucrative. जी. जो मैं जिन दोस्तों को जानता हूँ, everybody makes over 6 figures a year. Good. Some extra jobs and here and there. ठीक है ना? और फिर जब आप next rank में चले जाते हो, then you make even more, and then next rank even more. So this is really a great field to join. And not only law enforcement, I mean all these government jobs जो है ना, we should Public actually knock the door for that. और वो बच्चे और पेरेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा टेंशन कम हो जाए बच्चों के फ्यूचर की। ये अमेरिका है भाई, ये वो पाकिस्तान और इंडिया वाले शायद नहीं, मुझे कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बच्चा अगर नॉर्मल है, अच्छा है, कोई ड्रग्स वगैरह में नहीं है और कहीं गलत नाम नहीं बनाया या कोई रैकेट ख़राब नहीं किया, तो बहुत अच्छी जॉबें यहाँ मिल जाएंगी। आप फिक्र नहीं करें, डॉक्टर इंजीनियर्स ही बनाने की पूरी कोशिश नहीं करें। हालांकि मेरे भी 2 बच्चे मेडिकल स्कूल में ही, और मैं भी ये उल्टा है, अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, दूसरों को बनानी नहीं दे रहे। लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि बेटा प्लीज़ डोंट टेक इट दैट सीरियस। जब मैं देखता हूँ 18 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, यार मुझे पेन होती है, खुदा वो करना पड़ता है, बता रही हूँ आपको। आप भी डॉक्टर हैं, आपको पता है। तो अगर बच्चा वो बच्चे, those youngsters who are not into medical fields and they don't have to study 18 hours, come on, you don't have to. Law enforcement and other departments here, we have very lucrative jobs, very fine futures. Please join us. It's great and not that difficult as well. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीरियसली। तो उसी हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक तो बच्चों को वैसे ही नहीं भेजते, राइट? लड़कों को भी नहीं भेजते। एज अ फीमेल प्रोफेशनल मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ आए, बिकॉज आई वांट वुमेन टू बी देयर इन केस आवर कम्युनिटीज वुमेन हैव ट्रबल, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनसे बात कर सकें। एक औरत से बात करने में एक डिफरेंस होता है।
लॉ एनफोर्समेंट, सॉरी मैंने क्योंकि मैं इमोशनल हो गया हूँ आपकी बात से, प्लीज अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो खैर सिस्टम जो फेयर है, लेकिन फीमेल्स आर वेरी वेरी वेलकम जी, trust me, we actually really request females to please apply. बहुत easy रास्ते हैं, सीधे सीधे। मैं अप्लाई कर सकती हूँ? आप तो खैर अभी बहुत छोटी हैं। आप आज से कोई मेरा ख्याल है 15 साल बाद भी कर सकेंगे। डेंटिंग पेंटिंग ऐसी हुई है फिलहाल। And we do have some South Asian, Pakistani and Indian female police officers. Yeah. We have some at the Metro Police Department, the Precinct 6, Harris County Constable's Office, the Houston Police Department. So alhamdulillah, we're starting to make a lot of progress. Right. You know, maybe 20, 25 years ago, we maybe only had one or two Pakistani police officers, South Asian police officers. And, you know, I credit them as well because they helped for all of us to get in the positions that we're in today. Right. So, and they are going up in ranks as well. Yeah. मैं जानता हूँ शायद नाम मरियम है, शी इज़ नाउ सार्जेंट इन HPD. इसके अलावा एजुकेशन में एक अंबर खान है, शी हैज़ मास्टर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड कपल ऑफ अदर्स. अलमास जाफरी हैं, वो अभी पिछले दिनों शी इज स्ट्रॉन्ग and she made such a strong reputation in law enforcement. So many people admire her. She got into this accident unfortunately, but she is fine. को तो मैं जो है ना वो खुद भी फंसाने की कोशिश कर रही थी मेरे, क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी. I was so impressed by her. मैंने उनका Facebook का जब देखा मैंने कहा Almas Jafri, you Pakistani? You're a cop? Like I was so impressed by that. Like I messaged her on the side. वो जो नहीं तो थोड़े से DM में घुस गई मैं उसके. I slid into her ज़बरदस्ती वाले में DM में. मैंने कहा कि ये कोई creepy किस्म की लड़की है. मैंने अपने आप को मैंने कहा listen, I'm a professional woman, but I was just so impressed. Because हमारी South Asian women इस तरह के जब steps उठाती हैं तो मैं proud feel करती हूँ. Because it's not the norm, right? वो उस राह पे चलिए जिस पे हर कोई नहीं चलता. और फिर ट्रेनिंग और वो जो बैज हर वक्त और गन जो है ना वो आपको ऐसा फील कराती है ना, औरतों को भी दे फील देमसेल्व्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे डील in a very much better way in the society. And just to throw it out there, the benefits are great. Yeah. You know, for every dollar, if you work in a county law enforcement, Harris County, Fort Bend County, for every dollar you put in, they match it 225%. Oh, wow. Plus 7% interest is building upon that. So you can work and retire with over 7 figures. Oh, wow. Yeah, that's true. एक और सवाल वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले. मैं तो सोच रहा हूँ अप्लाई करने का, मैं तो जा रहा हूँ. I'm hiring. हम दोनों ने वैसे भी ब्लू पहना, मैं कह रही थी हम लोग जो है ना बाय चांस ब्लू पहन के. कई बच्चे यंगस्टर्स पाइपलाइन में हैं, मैं ऑलरेडी उनको टेक्स्ट करके पूछता हूँ, हाँ बेटा आज एक्सरसाइज की थी, रनिंग की थी. एक बच्चा आया, उसको यानी आया मेरे पास कि जी मैं करूँगा, तो आ रहा था मेरी तरफ, तो यूं चल रहा था जैसे वो अलहदा आ रहा है, पेट अलहदा आ रहा है. मैंने कहा बेटा मुझे तो नहीं कह रहे यार ये आप क्या कर रहे हैं. तो उसने मेरी बात को, वो एवरीडे रनिंग कर रहा है, एवरीडे पुशअप्स. अच्छा ये भी मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा आया तो उसकी अम्मी भी आई, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ लेकिन ये फेल हो जाता है. तो ये पास नहीं होता. मैंने कहा क्या मसला है इसका. मैं इंटरव्यू किया, पता चला जनाब तो तैयारी वो कर रहे हैं जो कोई रेसलिंग इंटरनेशनल उन्होंने करनी है. वो 400 पाउंड की बैठकें लगा रहे हैं, वो 2-2 400 दंड बैठकें निकाल रहे हैं, और वो पता नहीं 10-10 मील दौड़ रहे हैं. All you need 1.5 mile in around 16, 17, 18 minutes. ठीक है. ठीक. 35 push-ups within a minute or 35 sit-ups. That's it, for God's sake. मैं तो जा रही हूँ. I'm qualified already. Depending on what academy you go through. Okay. They have some academies. I believe the Lone Star Police Academy doesn't even have a physical training aspect of the program. But if you go to, like, let's say the Houston Community College Police Academy, theirs is going to be a little bit more strenuous because they put a lot of emphasis on personal training. Physical fitness. And physical fitness, correct. The Houston Police Department is going to be the same way. And then if you're trying to go to the DPS, I just, talked a little bit earlier about being in limit. One of the retired lieutenants from the Texas Department of Public Safety came in, and he was over their physical fitness and their training. And when we saw some of those videos, I was like, well, thank God. They were struggling. And by the way, lucrative itna DPS starts with how much? Around 90 plus, I believe.
I think after your first year. Oh, okay. Yeah. Yeah, after your Wonderful. first year, you'll start making about $70,000 to $80,000. Oh, wow. Indeed. Okay. And one more. Great, yeah. There is a agency in the nation. Can you believe what I'm going to tell you? No, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, देसी पैसे की जुबान समझते में हैं। बैठी हूँ मैं सफक क्या हो रहा है? सफक काउंटी एक पुलिस डिपार्टमेंट है जी न्यूयॉर्क में। जी बेस सैलरी $160,000 फॉर ये गॉड्स डॉक्टर सेक। क्यों बन रहे हैं लोग? मुझे तो मुझे समझ ही तो नहीं आ वाकई- रही। मतलब मैं तो कितने Just switch the 14 profession. मैंने Aisha, कितने yes. साल नहीं कितने साल तो मैं जाया कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं अब तो आप बोले 14 साल को हो रहा था। बेस सैलरी 160। मुझे पता होता मैं पुलिस में गुजरती होनी भी अच्छी थी। मैं- थोड़ा मैं सा भी टच चला भी ही चलता जाता मेरा। हूँ, हाँ सही बात है। वैसी एग्रेशन पता नहीं मैं वैसे मुझसे 35 वो भी नहीं लगेंगे, दंड भी नहीं लगने और दूसरे वो में- मैं करा दूंगी। अच्छा हाँ वो मैं ट्रेनिंग करा दूंगी, फिक्र ना करो। हाँ हाँ वो Yeah, एक I डंडा know भी a होता couple है good पुराने personal trainers. नहीं, वो हो I जाएगा। can barely do 5 actually. नहीं पहले दिन तो 5 ही करेंगे, लेकिन आप 2-3 वीक्स के बाद यू आर फाइन। अ मंथ Right. Yeah. Wonderful. You actually men gain that strength much faster than women do because they have a natural tendency to build protein muscle सही। compared to women. Women it's harder. So But- आप तो फौरन जिम जाएं तो आप एक महीने में हो जाएंगे। सही हो जाएगा। Yeah, we gotta listen to सब her. कुछ She's the अंदर- doctor. Yeah, that's what I'm अब सकअप हो जाएगा सारा। और एक और बात मैं बता दूं अंदर, ठीक है। ऑनेस्टली ऑल सलूट्स टू आवर लेडीज, लेकिन जो एक ब्यूटीफुल अमेरिकन कल्चर में भी मैंने देखा है, जो आदमी है ना पुलिस ऑफिसर्स, दे रियली केयर Oh, they फॉर do. द Yeah. पुलिस फीमेल पुलिस They're all ऑफिसर्स, Yeah. ट्रस्ट Yeah, मी। I know that, yes. No, अगर they care कोई for the police. you know, Oh, अगर कोई मसला हो They care for तो themselves. हाँ, अगर मसला हो, मैंने देखा है मेल ऑफिसर्स आर ऑलवेज इन फ्रंट। Yeah. तो ये नहीं, आई मीन कुछ लेडीज ऐसा सोचती है ना कि यार पता नहीं क्या, कुछ भी हाँ नहीं जी, है। हाँ जी। आपने कितना सुना है लेडीज को, पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ते हुए जॉब? जी, नहीं, नहीं, इट्स वेरी फाइन प्रोफेशन टू एक्चुअली गेट इनटू। जी। एक लास्ट क्वेश्चन आई रियली वांट टू आस्क दैट बिफोर वी रैप अप। आप लोगों का जो प्रोफेशन है, जिस तरह बाकी प्रोफेशन है, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, आपने सबको सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, आपने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, इन्फोर्स करने हैं जिससे हमारी सेफ्टी बढ़े, राइट? Why do you need the denomination, or why do you need the kind of recognition to be either a Democrat or Republican? Why is there denomination or politics in there? Yes. So That's a- that's थोड़ा a सा टफ हो very गया, that's मैंने a स्लिप very कर दिया। I know, yeah. that's a very touchy subject. I know. it However, is. you know, personally, I believe constables and sheriffs are elected. Your chief of police is like the Houston police chief is not an elected position; it's an appointed position. And whether you're a Democrat or Republican, you should still serve everybody, regardless if they're Democrat or Republican. However, I'm in the position I am today because it was a partisan election, for one, and I worked my tail off for this position, and now I'm the first Muslim constable, first South Asian constable ever elected in the United States. Right. And it took a Democratic sheriff, Sheriff Eric Fagan, who, by the way, if you guys do not know Sheriff Fagan, he is a friend to the South Asian community and is doing an amazing job. And because of him, a Democratic sheriff, we have Captain Nasir Abbasi today. Right. So I understand the political, side of it. Personally, I don't think it should be a partisan issue. Right. Because it doesn't matter if you're red, it doesn't matter if you're blue. Yes. We serve everyone. That's right. But in the aspect of, had there been a different sheriff elected or a different constable elected, in my agency, I brought in the very first African-American chief deputy in our history, Right. the very first female lieutenant, who's the third in command Right. in our history, the first Pakistani South Asian deputy in our history. Right. And that all happened by having a Democratic Muslim Right. constable. And the same goes to the sheriff, to Sheriff Fagan. Right. Completely diversified his command staff to truly reflect, with inclusion, the diversity of the community. Right. Yes. So I hope that Just take No, it no, like that that. does- This is the beauty of democracy. That's Yeah. why it's Yeah. better to just Yeah. take the people's vote. No, so I asked this question because I want the listeners to know, even if they're elected in that way, people shouldn't feel that they're not for everyone. Right. Like they are taking everybody along, they're keeping everybody together, and the goal at the end of the day is we're Americans at the end of Right. the day,
if you, in any other service, when you don't differentiate between different denominations, different genders, different kind of ethnicities and stuff, and the same thing is with the public office of the police department. We want to build that trust. And one of the biggest reason for that trust or mistrust is the fact that, they don't, or the police doesn't treat us the same way, or anybody with color. No, absolutely. But that's a general concept, right? And we want to, and that's one of the reasons आप लोगों को यहाँ पे बुलाया भी था कि, we want to build that trust, we want to build that integration with all of our public officers, high-ranking officers, उनको आप represent भी करें और साथ में community को भी साथ लेके चलें. मैं अगर अपना experience लूँ, I never see a biased police officer. Seriously. कि अगर Democrats को हैं तो वो फिर Republicans को treat नहीं करें. But I didn't see any biased police officer. And might be it is the part of your oath actually. Like you have to serve everybody equally. Absolutely. Well, I can tell you, Captain Abbasi is a good police officer. I'm a good police officer. There's thousands, over 800,000 police officers in the country. Yeah. Right. And good police officers do not like bad police officers. We want them completely vetted and out of this profession because it affects all of the good police officers. And we make it very important to us that every contact that we have with the citizen, whether it's a traffic stop or you're responding to, let's say, a domestic violence call, we want it to be a positive interaction. Right. Now, obviously, if you stop somebody on a traffic stop and you're getting ready to, let's say, you're writing them a ticket. Right. Well, sometimes you may not even have to write them a ticket. Write them a warning. So you take a negative enforcement and turn it into a positive reinforcement. Right. And, that's our goal, at least out in Fort Bend County, is to ensure that all police contacts have some sort of positivity in it. We want to build trust and legitimacy. Right. We want to police with community-oriented policing, but understanding that we have a job to do. We take an oath to uphold the laws of the state of Texas and the Constitution, and that's what we get paid to do. Right. और अभी नबील ट्रैफिक स्टॉप से मुझे याद आया कि कहीं प्रोग्राम इन्होंने रैप अप करना है, कहीं भूल ना जाएं. वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ों पीपल शुड नो, जब पुलिस ऑफिसर आपको रोक लेते हैं ट्रैफिक स्टॉप पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे देसी दरवाज़ा खोल के ना रिस्पेक्टफुल वे में उतर के उसकी तरफ चलना शुरू हो जाते. नहीं भाई, प्लीज़ डोंट डू दैट. स्टे वेयर यू आर बेसिकली उधर बैठ जाओ. बल्कि दोनों हाथ, आइडियली दोनों हाथ विंडो डाउन करके, अगर बारिश नहीं हो रही तो विंडो डाउन करके दोनों हाथ बाहर निकाल दो ताकि पुलिस ऑफिसर आपके हाथों को देख सके. योर हैंड्स आर द मोस्ट डेंजरस पार्ट. तो अगर पुलिस ऑफिसर आपकी तरफ आ रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी के विंडोज़ के डोर्स टिंटेड हैं, तो इमेजिन कि वो भी एक इंसान है और वो खुद आ रहा है और उसको पता नहीं अंदर से क्या कौन बैठे हुए हैं. तो बेहतर ये है कि विंडोज़ भी डाउन कर दें ताकि उसको वेलकम करें. ही इज़ योर पब्लिक सर्वेंट हु एक्चुअली डूइंग हिज जॉब. और अपने दोनों हाथ हो सके तो बाहर निकाल दें, और अगर पीछे कोई बैठा हुआ है वो भी निकाल दें ताकि पुलिस ऑफिसर आराम से उनको पूछ सके जो भी उसने पूछना है. और उसके बाद अगर आपका कसूर है तो वो जाहिर है कि देखेगा किसी हिसाब से क्यों रोका, और अगर टिकट लगता है तो आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही इज़ नॉट द जज. जज बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे जाके अपना अपील कर सकते हैं. और उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. एक 3 महीने का है कि 3 महीनों तक अगर आप ना मज़ीद लगाएं टिकट तो आपका रैकेट भी डिफर्ड वो ख़त्म हो जाता है. 2-3 ऑप्शंस, बड़ी अच्छी ऑप्शंस है. नॉट ए बिग डील. कोई अगर टिकट विकेट छोटी मोटी लग जाए तो प्लीज़ बी कोऑपरेटिव और कोई स्ट्रेस में नहीं आना खामखा में. और टिकट लगने के बाद हमें फ़ोन नहीं करना. हम नहीं करेंगे. मैं जब ऐसे यहाँ पे आ भी रही थी तो मुझे एंग्जाइटी लेवल थोड़ा, मैंने कहा पुलिस है वो देखो, खुद ही गिल्टी फीलिंग हो रही थी. कुछ किया भी नहीं है जिंदगी में, फिर भी गिल्टी फीलिंग. फिर जब देख लिया, then I was like, no, they're super nice. Even if you can't put your hands outside, the window. Put him on the steering Put him on the steering wheel. Yeah. Police officers are trained to always watch your hands. Yeah. And if you ever watch a use of force video, what's the first thing they're always yelling out? Let me see your hands. Yeah. Because the threat comes from the hands. That's right. And no police officer is out there to try to hurt anybody. We're there to truly protect and serve our communities. And if you guys have a question, I'll repeat my number one more time, and so can Nasir bhai. Yes, please. But it's 832-755-0922. And Nasir bhai?
832-232-1934 832-232-1934 जबरदस्त, ये सबसे अच्छा तरीका है ये सबको याद हो गया There you go. Perfect. थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो मजा आया। मुझे तो काफी चीजें नहीं हाँ, पता चली है। मैं तो exactly. समझ रहा था मैं पुलिस में नहीं जा सकता। हाँ, अच्छा मैं कहता मैं पुलिस हुआ, मैंने पुलिस नहीं कहता, मैं भी पुलिस ही कहता। पुलिस The popo. The purple. उठक बैठक करने वाले हैं इसके बाद हम लोग। नहीं, मैं तो 5 से ज्यादा नहीं कर सकता पुश। That's the max I can do. How about we do a competition? I just like I spare my case. I'm done. I don't want it. I'm good with 35. I think, Really? yeah, Oh, yeah, that's yeah, nice. Yeah, I yeah, can yeah, do that. yeah. Yes. That's one thing I keep up with because वो बहुत जल्दी lose हो जाता है। Actually, अगर आप ना my करो। weight is like kind of too much for my both arms. हाँ। So that's why. तो आप ऐसे करो, घुटनों पे करके करो, पूरा वो ना करो, half Yeah. push up करो, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। Oh. All right. Yeah. But guys, thank you very Thank much. you. That was amazing. Thank you for your Nabil time. And Nasir, thanks a lot for coming. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। But still आपके पास कोई मैसेज हो, कोई थोड़ा सा हमारी ना एजुकेशन की जरूरत है हमारी देसी कम्युनिटी को। So if you have something, please just say it right away ताकि हम थोड़ा और एजुकेट कर सके उनको। और अगर गाना सुनाने वो भी सुना सकते हैं। हाँ, बाय द वे मई में शेरिफ एरिक फेगन भी आ रहे हैं आपके इधर, मुझे बताया है अप्रैल में। तो अप्रैल में तो मैं अपने आपके ऑडियंस को जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना हो किसी किस्म का तो अप्रैल में, जैसे आज मैं एक्चुअली आज नबील का इंटरव्यू था, मैं साथ में बैठ गया तो इसी तरह मैं उधर भी बैठा हूँगा। इन केस अगर आप उर्दू में कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ अप्रैल में शेरिफ एरिक फेगन भी होंगे यहाँ पे। हम मसला लिख तैयार होंगे सवालों का। We do have a couple of iftaris that we're going to be doing, community iftaris. I know we are working on a couple of them. We have some with the DA's office in the city of Houston, through the Fort Bend County Precinct 4 Constable's office, along with the Sheriff's office, and several other community members that are going to be hosting iftaris. And then we'll come back with a major announcement on what Captain Abbasi and I are trying to put together for Eid. Oh wow! ये but हैंगर that's- छोड़ दिया There दरमियान you में। go. This is a cliffhanger, But right? we want to thank you guys for allowing us to join the Bollywood revolution Oh, on Absolutely. Radio The Bung 99.5 Yes. FM. So Awesome. thank you guys. Always. So one more question, like people from Harris County like me, they're invited too, or no? How are we supposed to know? Okay, कब होते हैं वो Like people iftar? like me, like I'm from Harris County, so I'm invited. or That like, that big event will be announced, and I'll tell you, it's going to be a huge event. all right. We're expecting close to about 20 to 30,000 people. Wow. खाना मिला लो। Man, I'm ready. I'm in. हाँ, हाँ। Might be I just take an apartment somewhere in like. नहीं Fort वो Bend. मेरा वो एड्रेस डाल देना। अच्छा, मैं वहाँ फोन पे ये भी हाँ होगा, वो हाँ ये ये डाल डाल दो। दो हाँ। सही। वो जो स्कूलिंग के लिए डालते हैं ना Schooling के डाल लिए। दो खाना मिला लो बस। You know it's fine. Alright, but guys, thank you very much. once Thank you. again. You guys were बहुत-बहुत very शुक्रिया। gracious and generous. So एक thank you. लास्ट रिक्वेस्ट आपके बिल्कुल। ऑडियंस से आपकी जी। तवस्सुत से जी। कि अगर जो हमारा नंबर भी आपके पास है, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके आइडियाज़ आर द रियल आइडियाज़ और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन। ठीक है। और अगर कुछ मेरा पर्सनल ये है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ को कि हमारी 2-3 जो बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, इंग्लिश नंबर 1, ठीक है, इंग्लिश की वजह से फिर बहुत सारी और भी कमज़ोरियाँ हैं। बिल्कुल। तो इंग्लिश और दूसरा कंप्यूटर, इन 2 चीज़ों में हमें अपनी कम्युनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी के पास आइडियाज़ हैं कि हम इंग्लिश और कंप्यूटर की एक क्लास वीक में 1 दिन का सेशन अगर रख दें, और आप लोगों के पास कुछ आइडिया है, अगर कुछ दोस्त इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकें, कोई अपना नबील शाह कह रहे थे कि ये अपना ऑफिस दे देंगे, सही। तो दैट्स ए ह्यूज हेल्प। तो इस टुवर्ड्स दिस कोई पढ़ा सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इन 2 चीज़ों को लेके कम्युनिटी में जाएं और ये चीज़ें हम बिल्कुल आम लोगों के लिए आम कर दें, तो दैट इज़ अनदर वे टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली वेरी So- ग्रेशियस अ लॉट ऑफ फन एंड Lot वी of कीपिंग द fun, नंबर्स और मुझे knowledge. लगता है मैं खुद ही सेव कर I got one more thing for Nabil actually. All right. Here we go. There you go. Oh, yeah. Dedicated to my wife. Okay, wonderful. So thank you very much once again for listening. Thank you very much for watching. So उसके बाद हम लोग अपना regular show करेंगे. But keep listening. Radio The Bunk 99.5 You're gonna have a lot of fun.
मैं तेनू ताज पवा दूंगा